Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we are having Rachna Gautam with us. Uh, she has completed her LLB, and prior to that, she has completed her BSc as well. And now, currently, she is working in the Center for Research and Planning, Supreme Court of India. And that is the reason I have called her, because the object of this interview or meeting is to inspire students, to let them know what is the journey of her legal study, how they can do various things along with only passing the LLB, and how they can even do internships, how they can join the research center as Supreme Court as well. And for all these things, today we are having Rachna with us. Good afternoon, Rachna. Hello. Yeah, as he has given a very nice intro of my leg. So I'm currently working as a law researcher in Center for Research and Planning, Supreme Court of India only. And I'm assigned into the project of SCGDK, which is under Center for Research and Planning only. So the primary work that we are doing, we will definitely talk about in detail later on also. पर जो मैं मुख्य तौर पे मैं जो काम करती हूँ वो जुड़ा है केसेस और सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी है उसको कर्व करने के लिए और इसी अप्रोच के लिए हम एक वी ट्राई टू टैग द मैटर्स सो दैट दे कैन गेट डिस्पोज्ड एट द अर्लीस्ट। तो उस प्रोसेस तक ले जाने का जो भी काम है उसमें थोड़ा सा किरदार मेरा भी है और बस हम यही करते हैं। और अपना अगर मैं और introduction kahu in a fashion. So I'm Rachna Gautam. I have completed BSc Honors in Mathematics at first, and after that I have done my LLB. I'm a first generation learner as well as a first generation lawyer. And along with that legal field, I am very much active in social activism and in some sort of political activism too. And that has been my major source of inspiration to step into the legal field too. Okay. Great. So I would like to start with your personal background, your personal education. So आप basically कहाँ से हो, आपका बचपन कहाँ पे गया, what is your family background? As you said, you are the first generation lawyer, and I think you are from Ghaziabad, if I'm not wrong. So I would definitely love to know your education process and even your what I can say a life process. कहाँ से हो आप और ये पूरा जर्नी आपने स्टार्ट कैसे किया? What is your background as well? Okay. So, yeah, as I have mentioned, that I'm a first generation learner as well as a first generation lawyer. तो मेरा जो स्कूलिंग हुई थी वो केंद्रीय विद्यालय कमला नगर गाजियाबाद से हुई थी। केंद्रीय विद्यालय आप सभी जानते हैं कि स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल ही है, लेकिन जो मेरा वहाँ पे एक्सपोजर था, आई वाज वेरी मच एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ओवर देयर टू। वो पूरी जर्नी थी as many things I could pick, I used to put that but I had a very strong interest in science. तो मतलब मैं फिजिक्स की बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी। मतलब आई रियली रिमेम्बर दैट देयर यूज्ड टू बी द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फिजिक्स फॉर 11 hours a day. So I was so much crazy about the science and there are also laws of physics and all. yeah. There's a laws of physics. There's a law there too. So at that point, I haven't even thought of that I will enter into the field of law or humanities or social science, because मैंने मेरे स्कूल टाइम पे कभी सोशल साइंस तो पढ़ी ही नहीं थी, because I was so much into the science, maths and other stuff. I was preparing for IIT and all. Somehow I cleared that too, but destiny was not there, so things didn't work. And that point of time I had just two options in the college, because most of the college and the timings were gone. So I had to either to take admission in Lady Shri Ram College or to Miranda House. I decided to go with NSR because I found that environment pretty cool. So I was like, "Chalo, yahan chalte." So you joined Lady Shri Ram College. Okay. Yeah, I have entered into there. So there's one privilege of mine. I should show that is of the geographical location. So there
multiple things I felt that like where I might be marginalized, but there has been one privilege that I had and I should accept it. That is of a geographical location, due to which this language sort of thing has come, and plus it would be comparatively easy for me to get into the LSR because I feel Okay. that how the economy वर्क्स सो वो थोड़ा सा था। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रिविलेज था, वेली बहुत मेजर प्रिविलेज भी था, जहाँ पे मेरे लिए एलएसआर में एंटर होना थोड़ा सा इजी रहा। जब मैं एलएसआर में आई, एलएसआर इज अ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव स्पेस, तो Okay. या दैट इज अ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव स्पेस। तो वहां जब मेरी एंट्री हुई तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द multiple fields of social science. Like I got introduced to the feminism, I got introduced to the communism and other part of the things. And that point of time, I got enrolled into these societies too. Like I started participating in debates and other stuff. तो Oh, मैं असल में मुख्य तौर पे मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल और अंग्रेजी डिबेट में प्रेफर नहीं करती थी, और मैंने पूरे टाइम हिंदी डिबेटिंग अच्छा. ज्वाइन करी। उसका बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि जो इंग्लिश है दैट इज language of elites mostly, like because unless or until you come from a particular socio or economic background, it is not very much easy for you to pick up with the language of English. तो मैं खुद से हिंदी की तरफ मेरा रुझान ज्यादा था क्योंकि मैं कविताओं में भी थी, तो फिर मेरे लिए हिंदी मेरी एक पसंदीदा भाषा थी। तो आई वाज लाइक आई विल गो विद दिस, आई वाज हिंदी डिबेटिंग, and then I started participating at the in the parliamentary debates and contemporary debates and turn codes. तो पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट था, आई हैव बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट। आई यूज्ड टू गो टू द डिबेटिंग्स, there I have learned how people really talk, like what kind of conversation does go over there. So when the intellectual people used to talk about something, so that used to inspire me, and I used to go back to my home and I used to pick up those 6th 7th 10th 8th 9th जो मैंने मिस कर दी थी। मतलब मैंने सोशल साइंस की वो बुक्स उतने उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, फिर मैं वापस और Okay. फिर मैं उन सबको पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, एंड देन आई स्टार्टेड Okay. रीडिंग बुक्स। तो बिल्कुल मतलब मेरे को फिर उस चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया, प्लस आई कुड सी द एग्जैक्टली द इफेक्ट ऑफ इट, लाइक द इफेक्ट ऑफ रीडिंग द सोशल साइंस वाज डायरेक्टली इन माय फ्रंट। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगा था, और ये कह सकती हूँ कि जिस चीज पर शायद मैं अब तक अपनी जिंदगी जी रही थी, साइंस और मैथमेटिक्स, उससे मेरा रुझान हट गया और मैं सोशल साइंस की तरफ इंक्लाइन चली गई। और सवाल अगर मैं बात करूं मैंने लॉ पे कैसे चुना, तो लॉ का एक बहुत बड़ा कारण मेरा डिबेटिंग ही था, लाइक द Oh, पार्लियामेंट डिबेट। जब आप करने बैठते हो तो आपको रियलाइज होता है कि इट इज मोर देन यू थिंक अबाउट समथिंग। एक सेकंड मैं बता दूंगी आपको, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद बंद कर दीजिए, 1 1.5 घंटे। I'm literally sorry for that. I think you can edit this part. we'll edit. हाँ, तो जब पार्लियामेंट्री डिबेट करने लगे तो डिबेटिंग असल में मैंने बोला जैसे मैं हिंदी में ही करती थी, तो हमें समझ में आया कि किस तरह से एक मतलब जो एक वो प्रोसेस होता था टू ऑब्जर्व द थिंग, to analyze the thing, to reason of that. तो मुझे पूरा प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। I literally felt that I find myself lively, very much lively in that entire process. During the debates. Yeah, Right. yeah. So that particular thing कि like कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें जीवित महसूस करती हूँ मैं खुद को इसे करने में, तो मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। But again, I didn't Okay. have the confidence of telling it to someone because कोई law लाइफ अब तो सेट होने के कगार में थी कि आप बीएससी कंप्लीट होने हाँ वाला है, एंड ऑल. mathematics honors पे नाउ और यू आर चूजिंग समथिंग अ टोटली लॉ. डिफरेंट, लाइक और जिसमें कि सबसे बड़ा हसल जो कि सबके साथ होता है लॉ फील्ड में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स द वन हु डिसाइड्स द 12th एग्जैक्टली आफ्टर द 12th they stepped into these national law universities under the prestige college। और एक लॉ फील्ड की बहुत ही कड़वा सच है कि यहाँ पर ब्रांड टैग का बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो उसके एक Okay.
हसल्स थे, बिकॉज आई न्यू दैट थिंग दैट आई डोंट हैव दैट ब्रांड टैग। तो मुझे वहां पे एकदम जड़ से शुरू करना है, और उसकी एक जर्नी बहुत ही हार्ड और जर्नी होगी। तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। आई लिटरली वेंट बैक टू माय होम and I said to my mama, and like it's a very surprising answer that she responds, like which is I believe that एक woman के जो पार्ट में एक हसल होता है, तो उसका भी एक स्ट्रगल का ही एक पार्ट था। My mama said you won't even get married if you choose the LLB. तो Oh. this is really that happens, so I failed in convincing to them. फिर उसके साथ में एक और चीज हुआ था, जब मेरा बीएससी ऑनर्स में थी, तो मैं 2016 से 2019 के बीच में थी। 2018 में मेट्रो का रेट बहुत हाइक करा। हाइक इट्स लाइक कि वो Okay. ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हाइक कर गया था। लाइक द मेट्रो का जो मैं 20 रुपए दे रही थी, वो मुझे 60 रुपए देने थे। मैं ऑलरेडी बहुत ही इकोनॉमिक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आती थी, तो हम ऑलरेडी मैथ्स ऑनर्स बहुत मार्जिनल पे मैं उसका किराया निकाल के कर रही थी। बट द थिंग दैट पर्टिकुलर थिंग हैपेंड, इट बिकेम ऑलमोस्ट इनएसेसिबल फॉर मी टू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एनी मोर। तो फिर ये Okay. डिसाइड किया गया कि अब गाजियाबाद से ही पढ़ाई करेंगे क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है। Okay. हाँ, वो बैरियर So नहीं there है। was law college in Ghaziabad as well. Yeah, so that law college was, that's why I Okay. have to switch to the from the Delhi University to this place in Ghaziabad only. और Okay. यही I will stop you here for some time because I want to highlight few points. That first of all, as you said, uh, in legal sphere, we are having one bad thing of a brand tag or something like that. That if you are passed out from NLUs, then you will get a good salary packages and good internships opportunities and all. This is the one thing. And secondly, you completed your LLB from the local law college, which was convenient for you. It was not the thought that this is the best law college and let's go there and study so that I will have a good bright career. So I would like to highlight these two things for all the students, that it's not about which law college precisely you are choosing for the LLB or LLM. Of course, it is important because you will get more exposure or your understanding, your more what we can say, more learning processes and all. But she is from the a simplified normal law college, we can say. Uh, and in addition to it, uh, she didn't run about behind the brand tag that NLUs had. So yes, Rajna, please continue. yeah. So the college in which I have studied, its name is IMH College Ghaziabad. It is a state board degree college. तो अगर मैं Okay. इसकी थोड़ी सी और बताना चाहूँ, मेरा जो एक मेजर रीजन है उसकी और डिटेल्स बताने का, वो यही है कि हाउ टू ओवरकम द हसल्स दैट वी ऑल फील। मतलब जो पूरा जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको हमें कैसे ऑब्विएट करना है। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ी, वो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, जिसके वजह से वहाँ की लाइब्रेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वहाँ कंप्यूटर लैब्स नहीं थे, वहाँ इवनली लेक्चर्स भी रेगुलर नहीं होते थे और बच्चे बिल्कुल अटेंड नहीं करते थे। तो उसके अलग अलग Friends, don't listen it. या यू कैन गेट दैट डेफिनेटली। मतलब मैं सच में खुद से एक बात फील करती हूँ कि लेक्चर्स अटेंड करना वाकई बहुत ज्यादा एसेंशियल है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, तब हमको उसका उतना ज्यादा मतलब वी जस्ट फील कि यार एग्जाम ही तो निकालना है, वो तो मैं खुद पढ़ के निकाल लूंगी। एंड दैट इज रियली ट्रू, Right. आप लॉ के एग्जाम्स को खुद पढ़ के निकाल Correct. सकती हो, बट जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसका उन क्लासेस का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब दोस क्लासेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप दैट। You socialize, you हाँ, interact with other हाँ, students, हाँ, teachers, हाँ। so it's good journey. जो बहुत इन डिटेल्स छोटी छोटी बातें जो अक्सर प्रोफेसर्स बोल देते हैं ना, बिटवीन दोस बेयर एट लाइन ओनली, Okay. that is the particular thing which defines your personality the moment you step out of your college. तो वो चीज Right. मिस करते हैं ना, तो वो आपको जब बाहर निकलते हो तो आपको समझ में आता है कि शायद काश मैंने वो क्लासेस अटेंड कर ली थी। यू लिटरली फील लाइक Right, right. यार। तो वो था कि अब बात करते हैं कि उस कॉलेजेस का सबसे बड़ा जो फॉल्ट, पहले मैं बोल रही हूँ कि बच्चे कॉलेज ही नहीं आ रहे, तो उसके बाद तो तुम और किसी पर्टिकुलर चीज में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज होने की तो बात ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो
मतलब हमारा कि that the comparison when we are not studying from an elite college, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें कंपैरिजन करना कि यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड व्हाट आर द बैरियर्स, कि क्यों क्यों मुझे Okay. बराबर तक पहुंचना है, मुझे कैसे पहुंचना है। तो पहला Correct. सबसे बड़ा, हाँ, ऑब्स्टेकल हम लोग देख रहे थे, दैट वाज लाइक आई वाज सीइंग दैट the crowd the crowd is not inspiring you to uplift yourself, to do something which is beyond your comfort zone, कि internships जाके ढूंढो। internships मतलब as in my college there's no any placement cell too, तो यही नहीं पता था कि internships को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से you don't have even access to good seniors, तो वो सब भी चीजें होती थी। तो आपको सब चीज अपने लेवल से स्टार्ट करना है, यू हैव टू डिसाइड लाइक कि मुझे ये जर्नी किस तरह से तय करनी है और कैसे मुझे वहां तक पहुंचना है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो सीधे से बस लाइक आई जस्ट फॉल इनटू द वेब, आई बिकेम ऑलमोस्ट शेमलेस एंड आई स्टार्टेड पिकिंग अप पीपल। मैंने लिंक्डइन उठाया, मैंने कोई सोशल मीडिया उठाया, आई वाज स्टार्टिंग, आई एम रैंडमली टेक्स्टिंग पीपल। मैंने पहली इंटर्नशिप जो करी थी वो मैंने इंटर्नशाला से ढूंढी थी, जो कि मैंने न जाने कितनी, Okay. या लाइक आई Intern लिटरली, shala. Okay. हाँ, I literally got, I can't tell you, more than 1,000 times rejected because definitely you Okay. cannot pave a path to that. But somehow I got a 1 month internship, and they were not definitely paying you. और आपको ऐसा लगता है कि when they choose interns, वहां पे भी brand tag plays important role? yeah, everything literally plays a very, you will find like very few people who will accept you, very few people। Right. से ज्यादा मुश्किल Correct. की शुरुआत करना। सबसे बड़ा जो मेरा इवन इन दिस करंट पोजीशन आल्सो व्हाट आई यूज्ड टू प्रे कि यार एक बार स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आई न्यू दैट आई हैव द पोटेंशियल, आई हैव स्टडीड दैट मच, आई Correct. कैन अपलिफ्ट ऑन But माय। the entry barriers are very huge. हाँ, द एंट्री बैरियर्स, दैट इज द रियली, वो पूरा ब्रांड टैग ने उसको इतना ब्लॉक कर रखा है, बिकॉज लाइक पीपल वर लाइक नॉट थिंकिंग कि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं। पीपल डोंट एक्सेप्ट अस लाइक क्या मतलब हम कुछ करके Right. आए हैं। तो आई लिटरली गॉट एन इंटर्नशिप, दैट इज अ मतलब ऐसे नॉर्मल इंटर्नशिप थी जिसमें कि वो आर्टिकल्स, पहले इंटर्नशिप कहाँ पे किया आपने? इट इज अ ट्रुथ एंड यूथ करके एक छोटा सा एक बच्चों का ही Okay. इनिशिएटिव था। इट इज एनएलएसयू अच्छा. एनयूएसआरएल के बच्चों का एक इनिशिएटिव था, लाइक दे हैव स्टार्टेड विद अ वेबसाइट समथिंग लाइक लाइव लॉ का जैसा। तो उसमें आप अच्छा. लाइक कि चलो मुझे कहीं तो मिला करके वाला, बट टू बी ऑनेस्ट दैट प्रोसेस वाज अ बिट हार्ड, क्योंकि हमें एक दिन में ही मैंने मतलब वहाँ 1 महीने की इंटर्नशिप में मैंने 30+ रिसर्च आर्टिकल्स लिख दिए थे। तो इट वाज Oh. लाइक कि यूज टू डू लाइक लॉट ऑफ स्टफ, तो मतलब वो काम था लाइक यू हैव टू वर्क। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि अगर बहुत छोटा मौका भी मिले ना, कोई कोई मौका छोटा छोटा नहीं, जस्ट पुट योर 101+ एफर्ट्स। तुमको नहीं समझ में आएगा कि लाइक विच थिंग विल लैंड यू वेयर। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि आपको जब आप कोई भी चीज आपको मिले, आपको जितनी भी चाहे वो लग रही हो, बट पुट योर 100% एफर्ट्स इनटू दैट, बिकॉज ये जो पूरा फील्ड है इसका एक एक फंडामेंटल जोन क्या है कि दे हैव अ लिंकेज, लाइक कि अगर आपको एक बंदे ने लाइक योर वर्क, देन प्रोबेबली दैट पर्सन विल मेंटर यू। ठीक है, तो जब मैंने जहाँ पे करा तो वो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं एसआरएल वाले जो बच्चों का था, द वन हु वर सीनियर टू मी वर वेरी मच यंगर इन एज टू मी, लाइक दे वर इन फर्स्ट Okay. ईयर। हाँ, तो Oh. वाज लाइक काइंड ऑफ And अ, they were giving you internship opportunity. हाँ, देन So दे हैव गिवन मी लाइक it's दैट it's इंटर्नशिप। quite strange. तो वो थोड़ा सा ऐसा रहता था कि यार ये तो मतलब मेरे से भी छोटे हैं, बट स्टिल, Exactly. yeah, but they stood in a senior position, तो I was like कि I will definitely put my 100% effort and learn as much as I could। तो मैंने वहां से ब्लू बुक साइटेशन सीखा एट फर्स्ट कि हाउ टू साइट योर आर्टिकल्स या रिसर्च एंड स्टफ, और इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू बुक साइटेशन ही काम करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आई हैव गॉट अप आई डिड अ पेपर प्रेजेंटेशन एट ब्रांडर्स यूनिवर्सिटी, which is in yeah, United States only, for the 6th international conference of on Dr. B.R. Ambedkar.
I literally miscertained few words. I really apologize for that, but तो that is No problem. I have literally done. तो आप धीरे धीरे तो जो मुझे लगता है कि उस पूरे जर्नी में how it got selected, मेरा वो जो पर्टिकुलर 1 महीने का टाइम था, that has given me that foundation. क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी, तो आई हैव लर्न बाय दैट टाइम हाउ टू लिटरली कंडक्ट रिसर्च, क्या उसके फंडामेंटल, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें होती है कि आप सीख ही लोगे जब आप दिन रात आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो लाइक हाउ टू जस्ट हसल. Then तो you got into that process हाँ wholeheartedly. You have to do it, and you will do it. हाँ हाँ, तो वह होने Rightly लगा. said. तो दैट्स Okay. हाउ थिंग्स स्टार्टेड. It was the first internship. Later on, there were few more I was internships. thinking again the hustle is same, because you don't come. Excuse me, and that first internship was during your LLB course, right? Yeah, Or that is, after completing the LLB? I was in second year that time. Okay, okay. Like, it is a 3 year school, so I was in second year, so definitely I don't Right. have very much time to. Again, I started looking for the internships. I didn't know how to literally approach that. Mail likha, nothing worked. Like, I literally written so many mails, nobody responded. And this is what happens, because by that time there are students who are holding more papers than you. You know what that paper means. Right. More experience of internships than Correct. by that time. By the time you have realized that it's important to do internship, by that time people have already that much of experience, so it is very much hard to compete them. तो वो एक hustle था, but still, like, I kept on applying, and just somehow something, like, to the one or other person, as I said, like, you that there's one person who liked your work, then that person asked you कि like मैंने उसके अंदर internship करा था, so I believe that you should try to that person. But you people will come and guide you in that fashion. He's open to that thing. So probably even if you don't come from that background, because there are, like, this is something I will tell you. ऐसा नहीं है कि सभी लोग को brand tag चाहिए. There you Right. might find even like 1-2 people at least who will more interested in your sincerity and your vision, and how much you're interested, how you really want to put your efforts into that. तो वो भी लोगों को मायने रखता है. तो जब आप करने लगोगे तो रियलाइज होगा कि शायद कोई तो आपको मिल ही जाएगा. ये तो But internships are important. You have to do few internship, internships during your LLB course yeah, like I and personally even believe, after the completion. by that time, because वो और एक और सजेशन, इफ इट इज पॉसिबल, तो इंटर्नशिप्स को मतलब मेरा खुद का ऐसा मानना है, 1-1 महीने की बहुत सारी करने की जगह अगर आप 2-3 महीने की एक जगह करें, उससे क्या होता है कि आप Okay. तो सेटल होने में लग जाता है किसी जगह पे, यू नो फिर उसके सभी बाद. नई चीजें रहती है, काम भी सीखने में हाँ थोड़ा हाँ वक्त हाँ जाएगा, and हाँ. then you will start actual working. Then you started really realizing कि मैंने करा क्या है और इसका क्या असर होता है. तो 2 महीने का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब इट्स लाइक वेरी गुड थिंग. तो उसके बाद आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू अनुपम श्रीवास्तव सर. I got it under him. He was the additional Solicitor General of NCT Delhi. So I got into him, and I was mentored by Dhruv Gupta sir. And to be honest, he welcomed me, like, to be say wholeheartedly, despite he knew like मैंने कोरोना के टाइम पे करा है और मैं इस कॉलेज से बिलोंग करती हूँ और मैंने लिटिगेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, like by that time I haven't been to court also. Like I literally told this much to him क्योंकि वो कोरोना वाले टाइम पे ही चल रहा था, तो मैंने कोर्ट नहीं देखा था. Right. And he was like, it's all, Correct. हम करेंगे, हम काम करेंगे. And Okay. to be honest, like I literally within the span of 1 month, वो मेरी 1 महीने की internship थी, I almost participated in 7 cases. तो which is in Okay. litigation is a very big deal. क्योंकि litigation में अगर आप 1 महीने में 7 cases में खुद को बहुत actively और बहुत ही like you contributing to that, तो ये काफी होता है. और that was like civil थे, और they used to often give me the cases which are related to the new acts. मतलब जो नए नए एक्ट्स आते थे, जैसे कॉटपा है या मोटर व्हीकल्स एक्ट तो खैर पुराना हो चुका है, या समथिंग लाइक वेरी न्यू न्यू एक्ट्स, तो वो मुझे ज्यादातर उसका काम देते थे. और आई यूज्ड टू लिटरली डू द Okay. रिसर्चिंग, थोड़ा सा ड्राफ्टिंग भी, एंड लाइक यू लर्न हाउ टू यू लिसन टू द पीपल. तो
तो मैं एक चीज Okay. privilege समझती हूँ that there had been people who were willing to help me. तो मतलब है कि अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है ना, that you want to learn something, people will come for Right. चलो ठीक है. Correct. And even getting a good senior or getting a good internship opportunity is very important, or we can say it is a boost for the your legal career, if I'm या not wrong. जैसे आपने कहा कि आप कभी कोर्ट में भी या लिटिगेशन प्रोसेस आपने देखा नहीं था, बट यू गॉट दैट चांस इन द सेकेंड इंटर्नशिप. सो या तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि पहले कभी भी कोर्ट में ना जाना, और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप यू हैड टू फेस इट. हाँ हाँ, मतलब इट इज समथिंग लाइक आई विल से द मोमेंट. तो अगेन वहीं पर वो कोरोना वाला टाइम भी था, तो मैं वर्चुअली अटेंड कर पाती थी, क्योंकि फिर से वो कोरोना हाँ. का वो थर्ड वेव आ गया था. Correct. लेकिन उस टाइम पर भी व्हेन आई यूज्ड टू लिटरली सी हाउ माय सीनियर्स इज आर्ग्यूइंग एंड हाउ दैट एंटायर एनवायरनमेंट इज, और सबसे बड़ा जो फील होता है ना, दैट आप जो काम कर रहे हो ना वो किसी की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, and that particular thing, the responsibility that you feel, the privilege and the pride that you feel within yourself, वो आपको हमेशा ना काम, आप फिर आप सोचते हो कि आप उस स्टाइपेंड के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो क्योंकि it is giving a fulfillment, a feeling of fulfillment to you. तो वो चीज थी, and that's how the things और work. इवन बहुत जगह पे सीनियर्स डोंट गिव स्टाइपेंड और हाँ समथिंग, हाँ बिकॉज देयर अप्रोच इज सिंपल दैट आई एम टीचिंग यू एंड I will teach you as well as pay you. It's a bit strange for them. Many times, of course, when you join a chamber or something like that, a law firm for the internship, they may give you stipend. But again, a point to be noted that हाँ don't work for the stipends in initial phases. हाँ हाँ, ये तो Go for बिल्कुल. the learnings या of the इवन field. आई ऑल्सो डिड सो मेनी, लाइक सो मेनी तो नहीं कर पाई, बट हाँ प्रीपेड मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी, मतलब जितनी करी लगभग प्रीपेड. Right. तो क्योंकि इसके बाद और कौन-कौन सी internships? हाँ, तो फिर इसके बाद में देन आफ्टर दैट आई ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन आई like Anupam Srivastava sir also like liked my work, and I thought like I thanked to him too. After that I worked under Professor Nikunj Kunshrestha. He is a professor Okay. at the Global Law School. So he was like working, he was into the research, so he was looking for certain research assistant, and he has provided me internship for the 4 months, which is a Oh, very great. long span. तो I was like कि let's put me into it, ये तो कर लेने का है, ये मुझे चाहिए था, like कि कुछ After the completion of LLB or during the LLB? ड्यूरिंग दैट होता है only. ड्यूरिंग Oh, दैट great. इट स्टार्टेड इन द थर्ड ईयर ऑफ माइन, मतलब मेरा थोड़ा एलएलबी That's लेट तक डिले होता रहा, तो उसकी वजह से मैं एलएलबी में ही थी उस वक्त पे, थर्ड ईयर में ही थी. तो वो 4 मंथ का इंटर्नशिप मैं साइड बाय साइड अपनी क्लासेस के साथ में ही कर रही थी, मतलब क्लासेस भी था, और 4 घंटे ही पर डे निकालना रहता था. इट वाज अगेन द रिसर्च एंड आर्ट, रिसर्च पेपर राइटिंग काइंड ऑफ वर्क ओनली. तो वहां पर भी सेम चीज था कि आपने एक बहुत ही आप प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हो, सो यू नो लाइक that person holds no extreme knowledge plus that he knows how to really deal with you, how to really teach you. तो वो चीज थी. correct. हाँ, तो फिर you started, then I started learning over there how to research, और कितने डिटेल में जाना होता है, how it is essential to really give timing to the research. मतलब Okay. उसके रिसर्च का स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में ही आपको वो चीजें पूरी करनी है. हाँ हाँ, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज द मोर यू विल गिव टाइम टू इट, द मोर यू विल इनहेंस द क्वालिटी ऑफ इट. तो मतलब मुझे याद भी है कि हम लोगों को एक एक मंथ के लिए एक लॉ क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए एक एक मंथ दिया, एंड यूज्ड टू Oh, बी लाइक ऐसे अच्छा. क्वेश्चन करा रहे खाली पूरा एक मंथ में. बट देन यू अंडरस्टैंड दैट ही एक्सपेक्ट दैट क्वालिटी फ्रॉम यू आल्सो, like if he has given something, so he expect you to that you should have like gone deeper into that research, और ये जितना भी उसमें हो सकता है, जितना भी एक्सटेंट तुम कवर कर सकते हो, and you bring up something which he might not have ever thought of or read. मतलब तो वो है कि रिसर्च का सबसे बड़ा टाइम दैट यू हैव टू गिव टाइम टू इट, प्लस यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, एंड देयर इज नो लाइक अनलेस until you feel like कि हाँ अब ये सेटिस्फाइड पोजीशन पे मैं आ गई हूँ, यहाँ इससे ज्यादा तो इसमें और कुछ नहीं हो सकता, तब तक करते रहो जितना हो सकता है. हाँ, पिकअप द कमेंट्रीज उठाओ, लाइब्रेरीज जाओ, कुछ भी करो. हाँ, मेरे पास में लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं था, एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, दैट द प्रोफेसर निकुंज कुलश्रेष्ठ, Okay.
the moment I told this entire stuff. So उनके पास कुछ पुरानी किताबें पड़ी थी अपनी, मतलब which was not in Okay. so he took that those books and he got that book into my library of the college. So he Oh, did those books great. because Really he great. felt कि ठीक है, मतलब ऐसा है तो हम कुछ तो कर सकते हैं जो मेरे पास वैसे भी यूज का नहीं है, तो तुम्हारे कॉलेज, एंड दिस इज रियली, आई रियली वांट टू It's एप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो आज शायद उन किताबों के से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो हेल्प हो रही है, क्योंकि right. बहुत अच्छा स्टाफ था। तो हाँ, मेरे को फिर अब ऐसा रहा कि आई लिटरली यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी एंड आई यूज्ड टू रीड दोस कमेंट्रीज, और फिर कमेंट्रीज पढ़ो, मनुपात्रा खोलो, एससीसी। मेरे पास मनुपात्रा और एससीसी ऑनलाइन का भी एक्सेस नहीं था, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रगल सब मतलब नॉट सो एनएलयू वाले बच्चे फेस करते ही करते हैं। और ये Correct. everybody seeks for that, like everybody in every internship it is required that you at least have a very good hold on Manupatra और SCC online, पर हम लोगों ने वो Right. देखा ही नहीं है, तो गुड होल्ड तो कब तक हाँ, आएगा, कहाँ तक आएगा। तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा, how to handle it, and then it will be useful for your senior. हाँ हाँ, सो दैट इज समथिंग। तो लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसा रहा कि आई लिटरली यूज्ड टू लुक फॉर द लाइक आई रिक्वेस्टेड सम अनदर प्रोफेसर, लाइक सर अगर आप उसका काम नहीं कर रहे हो, जैसे कि निकुंज कुलश्रेष्ठा सर के ये कलीग थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, अनुराग भास्कर सर, इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। तो आई लिटरली रिक्वेस्टेड हिम कि सर मुझे इसकी जरूरत है फॉर माय इंटर्नशिप, कैन यू जस्ट ग्रांट मी एक्सेस टू दैट, लाइक तो ही हैज गिवन हिज ओन यू नो ID pass. Even gathering this courage and asking someone is a bit difficult for the students who are not from the national law universities, because I have seen, or rather I would say, I gone through the same process. So asking some small things sometimes uh, आपको लगता है, शर्म आती है कि वो बोलेंगे कि तुम्हारे पास ये भी नहीं है, और इवन हाँ, you don't थोड़ा even सा। know this. But you have to gather that courage and go forward and ask for things that I don't know it or I don't have it. हाँ, या दिस इज समथिंग आई So लिटरली it will टेल help. क्लियरली कि यार मुझे ये तो नहीं आता है, Right. एंड प्लीज दिस इज द थिंग दैट आई डोंट हैव, और मैंने तो देखा भी नहीं है ये चीज, तो मैं ऐसे ये इन टर्म्स का मैंने बहुत बार यूज किया है। और एक और चीज जो मैं अक्सर बोलना चाहती हूँ, बहुत हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो लगभग सारे नॉट सो एलाइट इंस्टीट्यूट के बच्चे फेस करते हैं, दैट इज द थिंग दैट यू हैव रिमाइंडेड मी जस्ट, दैट इज ऑफ द कॉन्फिडेंस, लाइक टू स्टेप आउट, लाइक जब मैं भी यहाँ पर एज अ लॉ रिसर्चर काम कर रही हूँ, तो आई लिटरली फील दैट देयर इज अ एक्सट्रीमली डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटीज, लाइक they know how to approach the senior, how to impress them, how to smile, laugh all the time, like you know that thing, like they have Exactly. Exactly. indulged that certain traits inside you, that is something which people get to learn over there too, but अगर I तुम्हारे think, and even my personal observation is they have excellent communication skills. हाँ, Do you think so, in yeah, similar manner that, that is something as I you want. rightly said, they know how to approach people, where to tap, how हाँ, to where get to things tap, done. this is So the really they thing. they have that knack. Yeah, But they how do they get that knack?